साल पहले पंजाब के बरेटा गांव से आया एक विद्यार्थी चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ आर्ट में अपना वजूद ढूंढता ग्राफिक आर्ट्स और पेंटिंग में लीन हो गया। लेकिन दिलचस्प बात ये कि जब खुद को जाना तो कैमरा कांधे पर टांगा और निकल पड़ा कहानियां बटोरने, कुछ अपनी कहने और कुछ सुनने। और जब इनकी कहानियां लेंस का सफर पार कर दीवारों पर पहुंची तो फोटोग्राफी पेंटिंग में और पेंटिंग बॉडी आर्ट में और फिर थिएटर में कब घुल मिल गई कोई जान नहीं पाया। और इसी अचंभे में मिली चंडीगढ़ के फोटोग्राफर दीवान मन्ना को अपनी पहचान। देश और विदेशों की जानी मानी आर्ट गैलरीज और कला प्रेमियों में पहचान बनाते दीवान आज फोटोग्राफी से अलग एक और पड़ाव बाखूबी पार कर रहे हैं, चंडीगढ़ ललित कला अकादमी के चेयरपर्सन होने के नाते। और जाहिर है कि इस शहर की रगों में कला पिरोते आ रहे हैं, खूबसूरती से और जुनून से। जुनून का यही सफर हाजिर है बिटवीन अस। Welcome to the show, Diwan. Thank you. Of late, since 2008, of course, we've been seeing you more active as a chairperson of Chandigarh Lalit Kala Academy. लेकिन क्योंकि आप first and foremost एक photographer हो, so उस space में क्या हो रहा है आजकल? कुछ ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत जो ideas आते हैं वो कई बार they die their own death without being implemented. Some of them I do implement once in a while, but not really much. Don't you miss your photography, and don't you do you feel frustrated? No, I hardly feel frustrated because I have never ever set any goals for myself. When you have goals to achieve, then you really feel frustrated that they've not been fulfilled. But I take life as it comes. हम शुरुआत से शुरू करते हैं, You were growing up in Bareta, this small township in Punjab. और आप हॉकी प्लेयर बनना चाहते थे शायद, आपने मुझे एक इंटरव्यू में बताया था। आर्ट किस पॉइंट पे हैपेंड टू यू? आपको कब महसूस हुआ कि यू वांट टू गो टू चंडीगढ़ एंड स्टडी आर्ट? I used to write poetry. I used to do Ramlila, play in Ramlila, those kind of things, and I used to read a lot. So I used to paint, but I never thought that I'll become a writer or an artist like that. Actually, I came to Chandigarh to study non-medical, but I failed miserably in all the subjects. And then it was one of my teachers, he was an artist, and he suggested to me that why don't you join this College of Art there. And my brother, elder brother, when I failed twice in prep non-medical, then he said his interest is there, so he filled my application. I was selected in College of Art. That's how it happened. ऐसे हुआ था। आपने शुरुआत में ग्राफिक्स एंड पेंटिंग में ज़्यादा रुचि दिखाई थी, but gradually you picked up the camera. In fact, मुझे याद है आपने एक बार कहा भी था कि camera suits your level of impatience, I took to camera because I wanted to become a filmmaker. While studying painting and graphics art, it gave me kind of an in-depth understanding of the colors, of composition, and of feeling the materials. So I wanted to use camera as a tool, not as a camera as a camera person does. So it was not because of the impatience, it was because of the quick results which I could see with the camera. आपकी मैं सारी जो सीरीज हैं उनको एक बार मैं I'll just go through them, आपने शुरुआत की एलिनेशन सीरीज जो कि प्यून्स थे आपके कॉलेज ऑफ आर्ट के, that was your first portfolio, right? फिर वहाँ से लेके आपने वायलेंस पे की, which was based on riots, all around you, especially पंजाब में जो हो रहे थे और उस वक्त, and Kashmir and even North East. उसके बाद shows of the unknown, Waking the Dead, and After the Turmoil, and folk instruments of पंजाब पे भी आपने recently किया था। इन सब सालों में आपके सब्जेक्ट्स में क्या एवोल्यूशन हुई है, क्या चेंज आया है? Primarily I have been concerned with the socially relevant issues, whatever kind of, and I was of leftist kind of thought, and मेहनत कश मजदूर इस किस्म के बंदे हमारे ज़्यादा सोचना. So my series of ढाबा walas, my series of rickshaw walas, and even when I went to Indonesia, there too I clicked dhaba walas. So that dhaba wala series, so it continues, it never comes to an end. So the violence series is also not coming to, because violence doesn't stop. As long as there is violence in this world, our ways and means of dealing with it might differ and might change with times, but as long as this
issue is there, Yeah. so artists all over the world will keep responding to it, and so do I. आपने ग्राफ देखा है कि आप पहले किस तरह के सब्जेक्ट्स पिक करते थे, अब ग्रेजुअली व्हाट आर यू वेयरिंग टुवर्ड्स? I have always been very, very serious about what I do Yeah. and what I don't do. And a lot of things which I don't do, you know, because Like? you pick up a camera, you go to a street, you start clicking left, right, and you know whatever comes Yeah. your way. I don't do that. Yeah, yeah. Whenever I pick up my camera, I go with a purpose. Ji. You know, I just don't shoot, you know, without any Randomly. purpose. I must feel that there is a subject which needs some kind of a Expression. response or expression. Then I do. So I wouldn't say I've evolved. I've probably evolved maybe technically. Maybe there is more kind of a subtlety in the work. Earlier my work was a little more theatrical. Yeah. You know. And now sometimes I take the theatrical part out, you know, consciously sometimes, you know, but theatre doesn't go out of me. मेरा नेक्स्ट सवाल यही था कि आपका कंसेप्चुअल फोटोग्राफी है, यू गो द अदर वे राउंड, यू पिक अ थीम, फिर आप उसको इमेजिन करते हो, फिर आप अपने एलिमेंट्स चूज करते हो, एंड द एलिमेंट्स हैव बीन वेरिंग, यू नो, आपने राइट फ्रॉम फोटोग्राफी टू बॉडी आर्ट टू थिएटर सब यूज किया है. हाउ डिड यू रीच दिस ब्लेंड, यू नो, आपने ये फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन किस पॉइंट पे जाके अपने लिए फाइनली चूज किया और चुना या इवॉल्व किया? Partly a coincidence, partly by training, because I was trained as a painter. Yeah. I was trained as an actor because I used to do street theatre and TV plays, etc. जी. And I was doing photography. So Yeah. there was a combination of three. And I have seen like melas, you know, Chaparda Mela, when I remember. There I clicked pictures of those people who have those Jhatpat studios, you know. Yeah. And so that kind of a thing has existed in our culture. Yeah. You only have to pick up. But it was not a kind of a thought out kind of an idea. It just happened. Somebody wanted me to take some pictures for a magazine. So for that they wanted a title for the magazine. So I took a painting of my teacher and I, you know, asked a girl to pose because there were headless pictures in the paintings, and so I wanted to you know, communicate through the painting and the model that how somebody feels, you know, when you're made to think that you don't have head. Head doesn't mean only physical head. Head means thinking, you know, that you are non-thinking kind of a person. Passive. So, but then in the dark room I started experimenting, you know, because of those negative thoughts. I wanted to really express those through the visuals in a way that they don't hit you very negatively, at the same time that negativity should come across. Right. Then I started playing with the medium. It took me 2-3 years before I thought that this is something which I can really work upon very seriously, Yeah. and which I also felt that now it is worth exhibiting. इस तरह के यॉनर को, स्टाइल ऑफ फोटोग्राफी को आपने, स्पेशली मुझे जो सबसे ज़्यादा सीरीज दिमाग में आ रही है, वेकिंग द डेड एंड आफ्टर द टर्मोइल, इसमें आपने बहुत थारली यूज किया है इसको. शुरू किया था इससे, वायलेंस से. वायलेंस से शुरू किया था विद दीज वुमेन, यू नो. Whenever there is a violence, I always say that men get killed, but women are left behind to suffer in whatever shape or form. And in these kind of developing societies, women are by and large dependent upon men. You know, so उनका तो सारा पूरा जैसे कहते हैं कायनात सब कुछ गिर जाता है. So that's why. And in my family, my mother's side, they were like, I think 7 sisters probably, you know. And when I kind of my father also died very young, you know, by about 52, 53, and so all of my mother's sisters, my masis and everybody, वो सारी की सारी विधवाएं थी. फिर मेरे मामा जी वो भी गुजर गए, फिर उनकी वाइफ्स मेरी मामियाँ, फिर मेरे मामा के बेटे भी कोई एक्सीडेंट में किसी ने सुसाइड कर लिया, इस तरह की हरकत उनके भी. तो मैंने घर में आसपास इस किस्म का जो है ना औरतों का अकेलापन जो मैंने देखा हुआ था कि वो किस तरह से उनकी जो सफरिंग होती है, एंड स्पेशली दिस काइंड ऑफ सफरिंग इन विच पीपल आर किल्ड, यू नो, टू फेंड फॉर देमसेल्व्स. दैट्स व्हाट आई वांटेड टू एक्सप्रेस. जी. अच्छा, इस तरह का जो मीडियम यूज करने में, स्पेशली व्हेन यू वर्कड विद मॉडल्स विदाउट क्लोथ्स, यू नो, आपने खुद भी सेल्फ पोर्ट्रेचर भी किया, आई एम कमिंग टू दैट लेटर. इसमें सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहा
as an artist? कोई चैलेंज नहीं रहा, कोई challenge नहीं था। वेरी इजी, Because you're working in that very intimate space. उसमें कुछ तो एफर्ट लगता होगा just to make your model a little more comfortable. It depends which model you choose, you know, like अच्छा. first of all, like whenever somebody picks up a camera, it's a human tendency. People tend to, you know, click nude pictures, you know, because everybody is trying to explore the body, you know. जी. One is sometimes fascinated by the body, you know, Right. and especially in our culture where like nudity is something kind of a taboo. Although we have Naga sadhus and everything in our culture, which we don't really feel offended. Yeah. But I never felt like taking, you know, nude pictures. I took pictures of the naked bodies without the clothes because of the theme. Of The course. theme was waking the dead. You know? जी. That's in that I wanted to show various facets of death Yeah. and life. Yeah. So life comes from a woman, and if you want to show a woman without clothes, then you have to be a little careful that it doesn't fall into the genre of nude photography, Yeah. where you are trying to look Just titillate, or voyeuristic kind of a pleasure. It was not. In fact, it has to be in a way that when the viewer looks at it, the emotions which it should kind of अंदर से जो भावनाएं पैदा करे वो विजुअल, उसमें आपको नेकेडिटी वाला वो चीज दिमाग में आए ही नहीं. That was the, if you can call it a challenge, that was the challenge. Challenge. So वो उसमें इजी था बिकॉज जो लड़की पहली जिसके साथ मैंने ये काम किया था वो ब्रिटेन की थी, इंग्लैंड की लड़की थी, वाइट वुमन, यंग गर्ल एट दैट टाइम. सो उसको कोई फर्क नहीं था बिकॉज उनके कल्चर में ये पार्ट है, एंड शी वाज अ थिएटर पर्सन आल्सो, शी वाज एन आर्टिस्ट. So that helped. That helped. So it was, she was very very cool, very very easy. और मुझे बल्कि she helped me rather, you know, kind of take off my inhibitions. Right. किसी भी आर्टिस्ट के लिए, खास करके स्पेशली इन अ प्लेस लाइक चंडीगढ़ एंड द एंटायर नॉर्थ एक्चुअली, इस तरह के मॉडल्स आसानी से उस वक्त मिले थे और अब मिलते हैं क्या? If you really want to work with मुझे human कोई ज्यादा body. जरूरत नहीं पड़ी. मैंने 2 ही बार काम किया, 2 ही बार मुझे मिल गए, पर वो इतने आसान है नहीं है. जो मिलते हैं वो फिर प्रोफेशनल्स हैं. वो प्रोफेशनल्स को आप नहीं चाहते हो बिकॉज उनका बड़ा जैसे कैट वॉक होती है उस किस्म का एटीट्यूड होता है, बिकॉज दे वांट टू शो, नो, द होल बॉडी पोस्चर्स आर वेरी डिफरेंट. बट हियर इन माय पिक्चर्स they are more of actors rather than models. आपके दोस्त और लंदन बेस्ड पोएट और फॉर्मर नैक्सलाइट अमरजीत चंदन जी ने, you know, he just noted, I was having a word with him. उन्होंने कहा कि of course उमराव शेरगिल, you know, अमृता शेरगिल्स फादर, उन्होंने सेल्फ पोर्ट्रेचर किया था. उसके बाद शायद आप ही हैं जिसने इस यौना के साथ एक्सपेरिमेंट किया है, स्पेशली इन दिस पार्ट ऑफ द कंट्री. मुझे इस तरीके से कभी सोचा नहीं, मैंने पहली बार सोचा है. इनफैक्ट मैंने उमराव सिंह की तस्वीरें कुछ देखी हैं, बट उमराव सिंह सेल्फ पोर्ट्रेट वाज वेरी सेल्फ ऑब्सेसिव. Somebody who looks into the mirror, narcissism, you know. So he was obsessed with his own body. Right. You know, that is probably why he is trying to take those pictures. Achha. Unless, like, maybe I have to see them very closely. So in my pictures, it's not about me at all. जी. You know, I'm not trying to look at my body. I'm not even wanting to visit my body. My body is just another body. You know? And of course, self is there, but self is not because of the self. Like I am, whatever I am, because of you, because of others, because of all those people whom I deal with, you know, जिनके बीच में से मैं गुजरता हूँ, विचरता हूँ, तो उनको भी मैं अपनी पिक्चर में लेके आना चाहता हूँ. So मैं उसमें मैं सेल्फ, मैं ईगो, उसका कोई रोल नहीं है उसके अंदर. अच्छा, टेक्निक भी you know, समय के साथ साथ बदली है. कैमरास भी आपके बदले होंगे. What is the camera that you're using right now? अभी तो कैनन यूज कर रहा हूँ, पर मेरे लिए कैमरा इज वेरी insignificant. I don't really bother. I've never even bothered about cameras. Whatever camera, of course, like to जब से डिजिटल आया है, to be able to achieve a certain level of excellence in terms of